Good evening, dear students. Today we are going to study contribution of zain-ul-abidin in the field of arts and crafts. Before we study his contribution in the field of arts and crafts, let me tell you a story how he came to know about the arts and crafts which were practiced in Central Asia. Because majority of the arts and crafts which were patronized by him in Kashmir were brought by him from Central Asia. तो जैन-अल-आबिदीन, जैसे आप जानते हो कि ही वॉज द सन ऑफ सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर के पीरियड में इन 1398 तैमूर का इन्वेजन होता है। तैमूर का इन्वेजन स्टार्ट होता है और वो तैमूर का इन्वेजन जो होता है वो दिल्ली में होता है। वो तैमूर करता है इन्वेड दिल्ली को। तो उस वक्त सुल्तान सिकंदर कश्मीर के रूलर होते हैं। तो जो ही तैमूर सेंट्रल एशिया से निकलते हैं और दिल्ली को इन्वेड करने के लिए जब वो निकलते हैं रास्ते में होते हैं, तो बहुत सारे चीफ्स जो होते हैं रास्ते में, वो उनको या तो हेल्प करते हैं या उनको होमेज पे करते हैं। तो उनमें से एक सिकंदर भी होते हैं। तो जो ही सुल्तान सिकंदर को ये पता चलता है कि तैमूर निकले हैं वहाँ से टू इन्वेड दिल्ली, तो सुल्तान सिकंदर श्रीनगर से निकलते हैं टू पे द होमेज एंड रेस्पेक्ट टू सुल्तान तैमूर, एंड ही वाज ट्राइंग टू met him at दीपालपुर इन पंजाब, पाकिस्तान। तो वहाँ पहुँचने से पहले ही जब वो निकल चुके होते हैं ये सुल्तान सिकंदर, तो वहाँ पहुँचने से पहले ही सुल्तान तैमूर जो होते हैं वो निकल जाते हैं और सुल्तान सिकंदर को बोला जाता है कि आप 1 लाख दिनार्स, गोल्ड दिनार्स तैयार रखें और 30,000 हार्सेस आप तैयार रखें सुल्तान सिकंदर को देने के लिए। तो सुल्तान सिकंदर वहाँ से वापस आ जाते हैं और ये अमाउंट और इतने सारे हार्सेस को जुटाने के लिए वो कोशिश करते हैं श्रीनगर में। और इस पीरियड में जो सुल्तान तैमूर होते हैं वो पहुंच जाते हैं दिल्ली और वहाँ पर इन्वेजन स्टार्ट होता है। दिल्ली का उस टाइम का रूलर जो होता है वो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक होते हैं। तुगलक्स का रूल होता है, नसीरुद्दीन महमूद होते हैं रूलर। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद को हराने के बाद जब वो इन्वेड कंप्लीटली इन्वेड करते हैं दिल्ली को, तो वो एक एक्सप्लेनेशन निकालते हैं इस सुल्तान सिकंदर को कि आप मुझे एक्सप्लेन करें कि आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, दीपालपुर होमेज पे करने क्यों नहीं आए आप। तो सुल्तान सिकंदर अपने एनवाइज को भेज देते हैं। तो उसके जो एनवाइज होते हैं, मैन जो उसके होते हैं, वो पहुंच जाते हैं जम्मू और जम्मू में वो मिलते हैं सुल्तान सिकंदर से और सुल्तान सिकंदर से कहते हैं कि आप हम आने वाले थे तो आप पहले ही निकल चुके होते हैं, तो और हमें बोला जाता है कि आप 30,000 हार्सेस और 1 लाख गोल्ड दिनार्स तैयार रखें सुल्तान सिकंदर को पे करने के लिए। तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी है नहीं, हम इतना जुटा नहीं पा सकते हैं। तो सुल्तान सिकंदर तैमूर इनको कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से जितना आप दे सकते हो वो आप दे दीजिएगा। तो इसके बाद सुल्तान सिकंदर क्या करते हैं, सुल्तान सिकंदर जो भी जितना भी अमाउंट उसके पास होता है, जितने भी पैसे उसके पास होते हैं, गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स या जितने भी हॉर्सेस होते हैं, रिवार्ड्स होते हैं, वो उनको ले जाके अब वो चाहते थे कि जम्मू में वो सुल्तान सिकंदर के हवाले करे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले ही सुल्तान जो तैमूर होते हैं वो निकल चुके होते हैं और वो फिर एक मैसेज रखते हैं सुल्तान सिकंदर के लिए कि आप मुझे मिले ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। अब जो ही वो निकलते हैं तो रिवर इंडस पर पहुँचते वक्त उन जो पहुँचने वाले ही होते हैं तो उनको पता चलता है कि सुल्तान तैमूर जो थे वो वापस निकल चुके सेंट्रल एशिया। अब जो सुल्तान सिकंदर वापस आते हैं, अब वो क्या करते हैं, वो अपने बेटे को भेज देते हैं with all these gifts, gold coins and horses and other rewards। तो अपने बेटे को रवाना करते हैं सेंट्रल एशिया तैमूर के लिए इन चीज़ों के ले जाकर। वो सुल्तान जो उनका बेटा जो होता है, छोटा बेटा सुल्तान जैन-उल-आबिदीन, उसको भेज देते हैं।
सेंट्रल एशिया, तैमूर के पास, along with these coins, gifts, rewards and horses extra. अब 1401 की ये बात है, तो कुछ ये पहुंचने के बाद कहा जाता है कि सुल्तान zain-ul-abidin जब वहाँ पहुँचते हैं तैमूर के कोर्ट में, तो वो इन चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं और बाद में सुल्तान जो होते हैं सुल्तान तैमूर इसको छोड़ते नहीं हैं और वहाँ पर ही कोर्ट में रखते हैं तब तक जब तक सुल्तान तैमूर की डेथ नहीं होती है इन 1404। तो उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। फरिश्ता का कहना है, फरिश्ता जो आथर है, तो उनका कहना है कि नो एक्चुअली तैमूर ने क्या किया, तैमूर ने इनको उठा के ले गए ज़ैन-उल-आबिदीन को और वहाँ पर कैदी बना के रखा 4 साल के लिए। और 4 आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर तैमूर्स डेथ, व्हेन शाहरुख हिज सन बिकेम द रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया, तो शाहरुख ने इनको छोड़ दिया। और वहाँ पर ही जो सुल्तान ज़ैन-उल-आबिदीन थे, ज़ैन-उल-आबिदीन को बहुत सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का इल्म हुआ और बाद में वो वापस आ गए। जब वापस आते हैं तो यही आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो थे, इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को यहाँ पर सिखाया गया लोगों को, या सुल्तान ज़ैन-उल-आबिदीन ने खुद लोगों को सिखाया, तो इसकी वजह से आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की डेवलपमेंट हो गई। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये है कि अगर सुल्तान ज़ैन-उल-आबिदीन की बर्थ की बात करें तो सुल्तान ज़ैन-उल-आबिदीन खुद 1401 में जन्म लेते हैं और तब वो, अगर वो सुल्तान तैमूर के साथ जाते भी तब वो कुछ 3 साल के थे, तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो वहाँ से कुछ इल्म हासिल कर सकते थे, या इतना छोटा बच्चा वहाँ पर कुछ लर्न कर सकता और बाद में वही चीज़ें वो यहाँ पर सिखा देता। अब जो भी है, दिस इज़ द स्टोरी, और ये आपके साथ मैंने शेयर की, इसमें ज़्यादा हकीकत नहीं है। लेकिन एक बात और है, वो ये है कि शाहिद हमदान के वक्त में, जब शाह हमदान वहाँ से आते हैं, मीर सईद अली हमदानी, तो वो उनके साथ बहुत सारे सईद आते हैं और उनके साथ बहुत सारे जो काफ़िला उनका होता है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मालूम होते हैं, और जब वो कश्मीर में आते हैं तो वही आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वो लोगों को सिखा देते हैं, और उसकी वजह से जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की यहाँ पर डेवलपमेंट होती है वो वहाँ से ही स्टार्ट होती है। अब ज़ैन-उल-आबिदीन का इसमें क्या रोल था? ज़ैन-उल-आबिदीन का ये रोल था कि ज़ैन-उल-आबिदीन ने इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को एक तो ओन किया, पैट्रनाइज किया, सपोर्ट किया, और आर्टिस्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन को स्टेट असिस्टेंस दी ताकि इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को लोगों तक पहुंचा सके और ये एक तरह से एक्सपैंड हो सके ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो ये इसमें ज़ैन-उल-आबिदीन का हाथ था। ज़ैन-उल-आबिदीन एक्चुअली टुक सेवरल स्टेप्स हिमसेल्फ, ही टुक सेवरल स्टेप्स। वन अमंग द स्टेप्स जो अभी मैंने आपसे शेयर किया। दूसरा ये स्टेप कि ज़ैन-उल-आबिदीन ने बहुत सारे लोगों को यहाँ से कश्मीर से भेजा सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया या बहुत सारे रीजन्स में भेजा, और देयर दे केम टू नो अबाउट डिफरेंट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। और वहाँ पर इन लोगों ने जो कश्मीर से भेजे गए, उन्होंने दे लर्नड द टेक्निक्स ऑफ सेवरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, और सीखने के बाद दे रिटर्न बैक टू कश्मीर, and those arts and crafts which were learned by them in Central Asia, in several other regions of this part of the world, and also from India, तो ये वहाँ से लर्न करने के बाद इंडिया में वापस आ गए, और these arts and crafts which they learned, they were transmitted by them to the men in Kashmir, and that led to the development of arts and crafts during Zain-ul-Abidin's time. Yeah, this is the first thing. Second thing, several artisans and craftsmen were actually invited by him from Central Asia and from other parts of the world, and these artisans and crafts were given free boarding and lodging in Kashmir. They were treated like state guests, and they were given huge fees for making these arts and crafts upon which they were having the mastery, to make them learn to the people of Kashmir. इनको कहा गया कि आप लोगों कश्मीर के लोगों को सिखाओ ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, और उनको उसके बदले फीस दे दी गई। And then the people in Kashmir learned these arts and crafts, and after learning these arts and crafts, they were patronized, they were transmitted to different parts of Kashmir. तो ये दूसरा स्टेप था। इसके बाद ये जो लोग थे, ये जो सेंट्रल एशिया से लोग आए थे आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन, इनको कहा गया कि इनको दो चॉइसेस दी गई, या वन, they were offered to settle down in Kashmir, and they were given jagirs for that, and they were given state assistance to live in Kashmir.
They were treated as the guests of the state, and they were given a job as well in Kashmir. Or the second option which was given to them, that was if they wanted to return back to their original homes, they can return. And for that, they were given state assistance and rewards at the same time. Uh, Let me tell you an example, how people were sent by him to different parts of the world to learn the arts and crafts. During Zain-ul-Abidin's time, two men were actually sent by him to Central Asia for learning book binding there. तो वहाँ से वो लर्न करने के बाद वापस आ जाते हैं, वही बुक बाइंडिंग यहाँ पर सिखाई गई फिर लोगों को. Several arts and crafts were practiced during that period, like book binding, like glass making, like bottle making, like stone cutting, stone polishing, gold making, like boat making, this gaba making, namda making, carpet making, paper mache, paper making. All these arts and crafts, they were practiced by the people of Kashmir. But the step which was taken by Sultan Zainal Abidin for the promotion of these arts and crafts was he gave state assistance to the people for for promoting these arts and crafts. Loans were provided to the artisans and crafts for manufacturing these products uh, at their own level. Not only this, he fixed rates of the products, and Dasturul Amals are rate lists were actually inscribed on copper plates, and they were to be hung in the markets. And the products the products which were made by the artisans and craftsmen were to be sold according to the rates which were prescribed by the state. Mandis were established by him, and in these mandis, the products and tools and implements which were made by the artisans and craftsmen were displayed there and were sold there under the guidance and surveillance of the state. Apart from this, he regulated currency system. Gold coins, trimetallic currency rather, was issued by him in copper, gold, and silver, and that helped for the development of arts and crafts in Kashmir. Apart from this, he also ended this hoarding and black marketing of these tools and implements, and as well as the products which were made and manufactured in India. And another important step which was taken by him was the taxes which were imposed upon the products which were exported or imported in Kashmir or from Kashmir. The tax rates upon them were they were lowered by him, and goods were taxed only at two places: one while they entering into the borders of Kashmir, and second where they were to be sold inside the markets. I will tell you the how much India progressed in the field of arts and crafts during Zainal Abidin's time. It is being believed that during Zainal Abidin's time, the every area in Kashmir was other than agriculture, which was the basic or uh, primary function of the people during that period. Other than that, people were engaged in one way or another way with one or another craft. It has been actually mentioned by several writers as well as Sultan Mirza Hyder Daglut that when Sultan Mirza Hyder Daglut invaded Kashmir after 150 years of Zainal Abidin's death, he said that Kashmir was like an industrial hub after Samarkand and Central Asian regions. This means that in Kashmir, every art and craft was practiced on a huge or extensive basis. So this is actually the development of arts and crafts which happened during the times of Zainal Abidin, or which actually showed a progress due to the efforts which were put in by Sultan Zainal Abidin himself in these arts and crafts. Hope you will go through this lecture and you will try to understand what I have said. Uh,
थैंक यू वेरी मच।